welcome everybody. We are so excited, pleased to have Sanjeev ji with us. There's no introduction that would do justice to the legendary uh, projects, businesses, and so many ventures that he's helmed the entire leadership at, and created so many new products as well. I mean, I am surprised to know about them now and then. And Sanjeev Kapoor Academy is one of such gems that he's personally been leading from the front for, and he's prepared a lot of content personally. He's created a lot of courses that have benefited thousands of people around the world in the last less than a year. And today's session is going to be on a popular demand. We had a lot of questions that people had around things that they were learning from the academy and things they wanted to improve their business acumen on around the food domain. So welcome, Sanjeev ji. It's Thank you, Kinnard. such a Thank you pleasure to very have you much. here. And my quick introduction, I am the co-founder and CEO of Nourish. I am going to be a host here. So my job is just to pass on the questions to you and trying to coordinate to the best of my ability everything that people want to know more about, and to keep the session going. So Perfect. Sounds very good. quickly jumping onto the session now. It's been a very interesting journey for the last year or so. When you started Sanjeev Kapoor Academy, the thought was you wanted people to learn more about how they can start food businesses and a lot more. I think it would be a great idea for you to maybe shed a bit of light on what was the real vision and how has it been panning out and what is in the future. Thank you, Kinnard. Thank you very much. I think the whole pandemic has changed many things, many realities. And one of the things that I realized is that the opportunities come in many different shapes, sizes, and forms. And at times it comes presents itself in the form of a pandemic. And why does that happen? I think there are many opportunities that come our way and we don't take them. But there are times when one is pushed to the wall, and then you say that, oh, maybe I should try this, maybe I should try that. And over the years, what I have seen is that there are many people who enjoy cooking, who are good with the cooking, their food is appreciated, but they do it as hobby. They want to create an opportunity with and a business with it, but they shy away from it, and they think that maybe this is not for me, it is meant for somebody else. These kind of stories that okay, that person started something small and today that is generating so much of a business, and most people then would think that, oh, this is not for me, I'm happy with what I'm doing. People in the family, friends, they appreciate what you do, but it never translates into business. Some people may have started, some people may have started and failed. So they say that, oh, this is not meant for us. So when all this was going on, I was think many new opportunities and options for myself. And one of the things I realized was that there were opportunities in education, everybody understood, but how could that be leveraged for myself to begin with, right? Because I think it's before we can start thinking of others, it will be wrong to say that we don't think of ourselves, right? जिसको मैं कहता हूँ कि charity जो होती है वो भरपेट होती है, भरपेट अच्छे से होती है. ऐसा नहीं है कि you are not thinking of others, but you don't get time like that, no matter what your intent is, no matter what you want to do. So that's how it started, and I realized that this is something
which would help people who may just wanted to do it, somebody who been thinking of this for years. Some people needed to do it because all other doors were shut. What do you do? Uh, so there could be many reasons. There could be one reason, 10 reasons, hundreds of reasons. But I thought that this was something that would benefit a lot of people, and this was a first for us. It's not that we were experts in this, so we kept our head down, and with the Nourish's help, we said we will learn, we will understand, and we'll try and understand and create something which will help others. And while they create their business, we also get an opportunity to create an additional business for us. Absolutely. It's been so wonderful to see people putting their messages, sharing video. Oh, so sorry. Give me a sec. I can hear you, Kiran. आपकी आवाज नहीं आ रही. Am I back now? Can you hear me? No, Yes, I can. I cannot hear you. I don't know if Oh, no, others but can hear my you. team can Uh, hear me. So they've just sent me a I'm message. going So to, uh, yes, we can. Sonia says, yes, we can. Maybe, you need to switch it off and on then. We will be back in a minute, guys. Yes, I think there could be something at Sanjeev Ji's side. He's probably just changing the Wi-Fi or maybe trying to reattach the device. Now we can't hear you. So we can't hear you. We could hear you fine, but then it just went away. Hang on with us, guys. We'll be back any moment now. So for some reason, Sanjeev ji, okay. Can you guys hear Sanjeev ji? Just say yes. No, we can't. No. Okay. No. So I thought something weird had happened for the first time, that half of the people could hear him and half could not. No, but I think I'm audible. Something's went wrong at your end, Sanjeev ji. Would you like to join again? Sometimes that could solve the problem. Just leave the session and click on the link again. I think that could solve it. For people asking, will they get a recording of this? Absolutely, you guys will. We are just trying to bring this back up again. Just bear with us.
Sanjeev ji is joining the session back again, so he should be here any moment now. You guys will get the recording as well, so just hang on with us. He'll be here any moment. I should be audible now. Thank you. Thank you. Okay, he's trying to join back in. I think the team probably would want to see if he's joined back in the audience, or I think it joins back as the panelist. No, he's not joined in yet. Okay, well, I'm trying to see if he's facing any trouble. Yeah. Okay. Is it better now? Yes, we can hear you. Okay. Anji. Okay, now you're on mute. Okay. अब हम आपको All right. So we are back again. We can hear you now and we can see you. So it's all good. So let's jump right back into it. So what I was talking about was that we've heard from so many people who have really benefited from these programs, and they've all had one common thing to say, that they were lacking the final will to jump in, which you helped them cross over. And I know that you are working on some more aspects of the program as well. So if you would like to show some light on what is in the future for this start your food business from home and some other aspects. Sure. So naturally, the intent here is to make sure that when people join, they not only get to know about cooking, but also know a lot more on the business side. Now, when we talk of business, there are many elements to business. Business is how business is generated, how business day-to-day management is done, how costs are taken care of, how hygiene is taken care of, how rules and regulations have to be managed, basic marketing. So if I were to look at how home management is done, everyone does it in an informal way. But if we were to write down things that are done, there is a lot of management that happens. There's a lot of negotiation that happens. There's a lot of skills that are at play. So how do you use those skills in the business, inherent skills that one has? So I want to keep it more simple, not complicate, do it in a fashion that is understood by many. See, one is to give marketing gyan the way colleges do, but the other way is to give relevant information which is useful in a very easy way. So what is critical, what is not, what you should definitely few things that are non-negotiable. So for example, when you are doing any business, then understanding of costs and money is non-negotiable.
What do I mean by that? It's you, if you have intent to get into business, then don't shy away from understanding of money, taking care of money. If you say that I want to start a business, but I don't want to start a bank account, I don't want to have a GST number, I don't want to apply for a license, don't get into business, right? Non-negotiable, right? Things in menu, you want to give 10 things, 20 things, 30 things, but if you want to keep 100, no, if you're starting something from home, how do you keep it tight? What is the best number of dishes or items that you can have? It becomes critical. So there are food, non-food areas that are there. They need to be addressed. So we are trying to listen and keep on. We keep on making our content richer. We keep on adding to that, and there is a lot of work that is going on as we speak and as we hear, and that's why we do these live webinar sessions to hear our people as to what is needed. Now, in terms of course, there are other courses that we are launching, but the courses that we have launched, how do we make them more valuable? How do we make them more robust? Is by sharpening the knowledge and information that we make available. We keep on adding to that, and that's something that we will keep on doing it till we are sure that okay, now this is actually there is never any perfection. So now that's another thing that I talk about in my course is about perfection. Many people think that let everything fall into place, and that's when we will start. Whereas I say, don't wait for perfection. Starting today is more important. That will give you a lot of learning. There would be cost of learning. There would be failures, all of that. But doing it, having the courage to do it is more valuable than waiting for perfection, because we don't know what perfection is. Because what our idea and thought of perception is very different from the user's idea of perfection. So there are many such things. There are new courses that are there, and I'm sure that through knowledge, we'll keep on reaching to all the people who have joined the courses, who have not. I keep on hearing that people ask me, I want to become a great chef like Sanjeev Kapoor. And my answer is don't. Become better. Right? And how can you become better? Yeah, there is, it has taken me lots of years. Don't expect anything in rush. Don't expect that you will do a 3-month course, 6 months course, 1-year course, and that's how it will become. It does not become like that. It takes time. There is no instant way to any success. Does not come in just like this. If anybody promises that, they are lying. Would I ever promise? No, I would not. And that's the course, that's the integrity of the course that we want to maintain. So amazing. One thing that I always learn from you, and I think you have touched upon it, I would like people to make a note of it and use that knowledge. You jump into it and get it done without thinking about perfection in the first step. And because you have so much of experience, and obviously there's God's grace, you always end up making a great a product or a company that is iconic. But I think that one quality of jumping in without thinking of perfection is something that I try to learn from you, and I quote that to everybody who's trying to be a content creator or an entrepreneur. So I think that's one thing that I would recommend everybody listening to this session right now, this webinar right now, and even later on. You've got to jump in, and this is one thing that we learn from you. But that is something, there is a caveat there. अच्छा, काफी लोगों ने बोला है कि हिंदी में बोले, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जब हम perfection की बात करते हैं, why do I say that don't wait for perfection? If you are likely to lose lots of time over that, it's better to run and
learn on the run, right? Yeah. Rather than keep on waiting for perfection, which you may not achieve in any case, right? Because definition of perfection is never perfect, right? It keeps on changing. It's dynamic in nature. आज हमने सोचा वो आज के लिए परफेक्ट है, 3 महीने बाद वैसे एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया था. पता चला कि हमने एक वैक्सीन 1.5 साल बाद निकली, हमें लगा अब सब ठीक हो गया, फिर उन्होंने कहा नहीं 2 लगेंगी, फिर ये हो गया कि ओह अब तो डेल्टा वेरिएंट आ गया, वो भी परफेक्शन नहीं. सो इमेजिन विद सो मेनी वर्ल्ड साइंटिस्ट दैट आर देयर, उनसे मतलब एक वैक्सीन ऐसे परफेक्शन नहीं होती, तो और हम और आप कौन है? तो इसलिए बेटर टू कीप ऑन बी एट इट. एंड जीतने के लिए ना बाहर से बैठ के नहीं जीत सकते. यू हैव टू बी इन टू विन. बाहर से बैठ के छक्के सब लोग मार सकते हैं. ये क्या खेला है सचिन ने, छक्का पड़ता था इस पे मैदान में आके. Jump in. So that's motivation for today. Everybody's got to make a note of that one. Now, one of the things everybody gets stuck on कि नाम क्या सोचें बिजनेस का, ये people get stuck. And आपके पास की स्किल छुपी हुई थी, मुझे भी नहीं पता था, 5 से 7 दिन पहले ही पता चला. When we were actually on that call and this new academy that we've been thinking of, जो एक health के ऊपर, हेल्थ फूड्स के ऊपर एक प्लान जो आप बना रहे थे, उस पे जो एकेडमी आने वाली है, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी द स्पीड एंड the formulas that you suggested to think of a good name. So how can people think of a great name for their business? Sometimes people get stuck, and I think we've been on a similar boat. हफ्ते लग जाते हैं, कई बार महीने लग जाते हैं, and people think no, अच्छा नहीं है. So कितना अच्छा है और कहाँ पे बोलें कि नहीं, अब that's it, this is a good name, let's go with it. What's the formula you would suggest? Right. So I would say कि इसके अंदर फॉर्मूला से दिल से आवाज आनी चाहिए. So what is the intent that is there? हम कोई कभी भी कोई ब्रांडिंग किसी चीज की होती है, नाम कोई भी होता है, तो उसके अंदर अगर लेट्स से हमारे पास में बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करने के लिए नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा नहीं प्रमोट करने के लिए, तो एवरीथिंग कैन बी इन द नेम. सब कुछ नाम में ही हो सकता है. खाना खजाना जब हमने दिया तो ये खाने का खजाना है, खत्म, दैट्स इट. इसमें कोई वो नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था. और देयर कैन बी सम इंट्रीग दैट्स देयर. आप अपनी पर्सनल एक्टिविटी को कर सकते हैं. सो हमने जैसे अब एकेडमी का नाम रख दिया संजीव कपूर एकेडमी, दैट्स इट. वी डोंट हैव टू से एनीथिंग. इट्स क्लियर क्या है, संजीव कपूर की एकेडमी है. यू डोंट हैव टू रियली वरी. मेरे एक दोस्त ने केटरिंग का काम शुरू किया है, विनोद नायर उसका नाम है, और उसने जो क्लाउड किचन और बाकी शुरू किया है, केरला से है, वो रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं. सो नाम ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट आनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर जो दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए. It should be something that sticks in your mind, and it can stick because it is not very common, right? So if I were to say कि हमारे रेस्टोरेंट का नाम है द रेड चिली, right? Okay, आपने सुना, चले गए. मैंने कर दिया हमारे रेस्टोरेंट नाम द येलो चिली. क्या? Now there's an intrigue. आपने दोबारा नॉक किया, you wanted to be sure, तो हमने एक टिकट में 2 मजे ले लिए. अगर हम उसी चीज को द रेड चिली करते तो आप सुन के निकल जाते. जब हमने द येलो चिली किया तो नाउ यू वांट टू बी श्योर. हम तो श्योर थे, सामने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, वो श्योर होने के लिए वी गॉट एक्स्ट्रा बैंक फॉर आवर बक, राइट? सो इसी तरह से जैसे मैं, विनोद नायर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ही स्टार्टेड दिस, व्हाट डिड ही कॉल हिज ब्रांड इज नायर ऑन फायर. Oh, that's nice. Phonetically, it's nice. Very nice. Fire is all about cooking, and it has that intrigue. It has fun. It is so सारी चीजें हैं. प्लस आज के जमाने में ब्रांडिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहिए. It should be simple. It should not be complex. It should not be too long, and it should be something that can be easily retained. दिमाग में यूनिकनेस होनी चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए. इट शुड नॉट बी समथिंग
बहुत मुश्किल से बोलने में होना चाहिए। जैसे मेरी जो बड़ी बेटी है, व्हेन माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग हर, तो हमने कहा नाम सोचते हैं, एंड आई वांटेड, उस समय के टाइम में जब थे नाम वगैरह, तो हमने सोचा आकांक्षा नाम, नाइस नेम, वेरी गुड। पर 2-3 लोगों से हमने कहा टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट मार्केटिंग बड़ी जरूरी है, डिप्स्टिक करते हैं। 2-4 लोगों को पूछा, मुंबई में थे, गुजराती बोल रहे थे, 1-2 पूछा, बहुत अच्छा नाम है आकांक्षा। तो जैसे ही वो आकांक्षा हुआ, मैंने कहा अब नहीं रखना, राइट। सो आपके ब्रांड का, आपके नाम का वहां पे गड़बड़ हो गया। सो हमने चेंज करके सिंपल, हमने कहा नाउ सिंप्लिसिटी, सो हर नेम इज रचिता, because I wanted a creative thing. So other daughter is Kriti, simple. So naming any business, creating any brand, it has to be unique. It has to be something that will create some differentiation, should be retained well, should have preferably a ring to it when you speak. Phonetics are important in that, and naturally फिर उसके साथ में उसको आईपी के लिए देखना पड़ता है कि आपको उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं कि आपने सोच तो बहुत अच्छा लिया पर वो किसी और ने लिया हुआ था। अनलाइक बच्चों के नाम कईयों के एक जैसे हो सकते हैं, बिजनेस में अपना यूनिक रखना जरूरी होता है, बिकॉज दैट्स योर ओनरशिप। Yes, and when we were sitting to finalize the name, and this is probably an idea for people to look at, is open GoDaddy, name.com or some other site and keep looking, because you might have a good name, but अगर वो और बहुत लोगों का है या वो बहुत common है, it's no good. So you'll have to run this test at multiple sites, and then you come to it. So one shout out here from the messages that we are receiving. So a few people have been sharing the names they have kept, and I liked one that I read, Khanna Dil Se. So somebody has kept the name for their restaurant. That's an interesting one. Now, किसने पूछा नाम हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है कैसा आप, what do you want to stand for, what will, अगर आप अपनी हिंदी भाषी जगहों पे रह रहे हैं तो आप हिंदी में भी रख सकते हैं, अंग्रेजी में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया सारा इंग्लिश में ढूंढ रहे हैं लोग आपको आपके ब्रांड को, सो इंग्लिश स्पेलिंग में बी इजी। एंड देयर आर ब्रांड्स, ऐसा नहीं कि कोई उसका मतलब भी होना चाहिए, जोमैटो, स्विगी, राइट। सो अंडरस्टैंड दीज आर यूनिक क्रिएशंस दैट पीपल क्रिएट। हाँ, उसको बनाने के लिए क्रेजी बाइट कैसा रहेगा, कैची करी कैसा रहेगा, बिल्कुल क्रेजी से मुझे याद है, हम तब मैं मुंबई नहीं, बचपन में कुछ साल दिल्ली में था, तो राजौरी गार्डन में हमारे एक कैफे एक होता था जिसका नाम था क्रेजी काउ, बहुत चलता, राइट। सो नाउ लुक एट कि थोड़ा सा उसके अंदर मस्ती अगर होगी, सो ब्रांड्स कैन बी सीरियस, ब्रांड कैन बी फन, ब्रांड अलग अलग किस्म से। आपका किस तरह से है, क्या चीज आप कर रहे हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट जो है दैट, जैसे मैंने येलो चिली का एग्जांपल दिया, आप अगर पिंक बनाना, लेट्स सो व्यू है, सॉरी क्या, तो इट इज नॉट, एंड एट टाइम्स, हाँ, डोंट गिव, क्योंकि खाने का है तो कॉन्ट्रास्ट ऐसा ना दिए कि फ्रेश टोमेटो की जगह आपने दे दिया रॉटन टोमेटोस, राइट। डोंट डू दैट, make it fresh, make it nice, make it crisp. Great. This would help people decide on the name. So what you're suggesting, catchy hona chahiye, fun hona chahiye, don't get stuck on it, don't spend weeks and weeks on it, go out with it. Again, जो आपने सबसे पहले कहा, jump करना ज़्यादा ज़रूरी है. So don't have the analysis paralysis. But you know, doing this session with you, I'm realizing one thing, कि आपके साथ में session करने में, I mean, the questions, we could probably spend a few hours just answering everybody who's got the desire to get their questions answered by you. So I would let you pick the questions whenever you feel there is something relevant to what you're talking about. But I'll keep moving with the ones that we already have and the flow that we have decided based on some of those. So people are asking, cloud kitchen is something that
is the result of starting a food business from their home. The course that we have is Start Your Food Business from Home, which also means that it's the word says start from home, but it could mean, and there were a few people who mentioned that, in some towns, in some cities, starting from home is not allowed. So I would like you to highlight this, that cloud kitchen, the concept and how this connects with start from home. Sure. So naturally, जो पूरा हमारा course material है, that's all is relevant for starting your cloud kitchen. जो kitchen है, वो dark kitchen है. कहाँ पे है is not important. But अगर आप ये business कर रहे हैं, तो if you are creating a very large scale, then say that I am starting a cloud kitchen. But if you want my advice and be smart, if you're only doing one, you're not looking at 2, 3, 4, 5, then say home kitchen. Home kitchen has emotion. Home kitchen has personality. Home kitchen is personal. Home kitchen, you can charge a premium. Cloud, you would be in a crowd. Oh, that's another quote for today. Great. So home kitchens would have that power. Amazing. Thanks for clarifying that. Now, people are asking, for starting these businesses, should they hire a cook to begin with, or they can just jump in themselves, get it started, or uske baad mein they can bring in somebody from outside? So understand that अगर आपके पास में कुछ आपने शुरू करना है, अगर आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास में कोई स्किल नहीं, right? So you will have to hire. पर अगर आप कुछ खुद कर सकते हैं, जितना खुद कुछ कर सकते हैं उतना करें. Immerse as much as you can. बाद में हायर करने की सोचें. पहले सारी चीजें, अकाउंटिंग, लाइसेंसिंग, परचेजिंग, मार्केटिंग, कुकिंग, डिलीवरी, व्हाटएवर जितना आपसे बन पड़ता है वो करें. Why? That gives you sense of ownership. That gives you great learning. But it should not scare you away. It should not be, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कर तो लिया, मैंने बहुत थक जाते हैं. Then see, okay, what can be delegated, and restrict yourself to doing things that you are best at. So अगर आपको लगता है कि आप खाना बनाने में अच्छे हैं, तो focus on that. But initial period, सारी चीजें खुद करने की जरूर कोशिश करें. That is when you can control your business as you go forward, because then nobody will be able to take you for granted. Nobody will be able to take you for a ride. नहीं तो क्या होगा कि आपको बेवकूफ बनाएंगे, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, ये हो गया. तो अगर आपको आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, अगर आपने कुक रखा, आपको कुकिंग नहीं आती है और उस दिन आपको कुक नहीं आया, तो आपका बिजनेस तो उस दिन का लिए ठप हो गया, राइट? So don't be dependent. तो जब मैंने खाना बनाना शुरू किया, तो मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई, और हमारे यहाँ पे मतलब बड़े-बड़े धुरंधर हुआ करते थे जो टेस्ट लेते थे. Because I was 20 years old, I was the boss, शेफ था, तो लगते थे कि इनको परेशान करते हैं, शेफ आया नया लड़का है, इसको परेशान करते हैं. तो कभी तंदूरी भाग जाए, कभी पुचरी वाला भागेगा, कभी कोई भागेगा, पर मैं सारे काम करता था. कुछ काम थे जो वहां पर ही मैंने सीखे. And I used to do that, and over a couple of months they understood कि कोई फायदा नहीं है, इनको टेस्ट कर लिया, ये काम कर सकते हैं, अब चुपचाप गर्दन झुका के काम कर दो. So build that skill set. अच्छा, किसी ने बड़ा अच्छा एक पूछा है कि ये डिलीवरी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए. Very very interesting question. इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी. You will get everything. So delivery key problem. See, one is that there are platforms that generate business for you and also deliver, right? And you can be on their platform. So whether it's Zomato, Swiggy, or हर city में उनके अलावा भी कुछ 1, 2, 3, 4 होते हैं. उसके अलावा, let's say now, so for example, I was looking at the numbers and I realized कि जो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, पीपल हु जनरेट बिजनेस फॉर यू, अगर आप छोटे प्लेटफॉर्म अपना बिजनेस छोटे स्केल पे कर रहे हैं,
So these large platforms may not be that good for you because your cost is very high. जो आपसे वो चार्ज करेंगे, उसके बाद में आपको डिस्कवरी के लिए उन प्लेटफॉर्म्स को और मार्केटिंग पैसे देने पड़ेंगे, तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ जाती है कि आपका बिजनेस तो आप कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं बनाते. So the only way to do that is to first look at local area business. जो आपके आसपास का बिजनेस है उस पे फोकस करें. क्रिएट, हो सकता है आप एक लड़का रख लें जो साइकिल पे जाके डिलीवरी कर सकता है, राइट? लोकल एरिया, 1 किलोमीटर 2, ज्यादा मत सोचेंगे वो वहां से ऑर्डर आएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा. अगर ऐसा आता भी है तो देन यू कैन से दैट वी डोंट हैव डिलीवरी देयर, बट वी विल अरेंज टू डिलीवर दिस एट योर कॉस्ट. एंड देयर डिलीवरी पार्टनर्स टुडे. आज की डेट में बड़े शहरों में जैसे अलग अलग वी फास्ट हैं, ऐसे काफी सारे अब लोग हैं जो आप उनको सामान दें वो किसी भी एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं. You can decide whether you want to bear that cost or you want to pass that cost to the customer. It will depend on कि आप कितने पे बेच रहे हैं, कितना उसकी डिलीवरी कॉस्ट है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. Now कैलकुलेशन के हिसाब से if you are looking at business, तो आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं, आपकी खाने की कॉस्ट है, आपकी लेबर कॉस्ट है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपकी चले घर से बना रहे हैं तो मैं उसकी स्पेस की कॉस्ट नहीं लेता, which can be a large cost, पैकेजिंग कॉस्ट है. ये कॉस्ट के बाद में आपके ये should never go more than 60%. ये जितनी सारी चीजें हैं, so that 40% that is there should be दो चीजों के लिए काम आना चाहिए, डिलीवरी के लिए और आपके मार्जिन पे. सो दिस इज द रफ ब्रेकअप. इस तरह से आपको रफ ब्रेकअप अपनी कॉस्ट का करना चाहिए. अगर आप किसी चीज का 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो उसमें से ये जो पार्ट है ये इस तरह से होने चाहिए कि 40 रुपए आपके पास में बचने चाहिए जिसमें से डिलीवरी भी हो सके और आपका मार्जिन भी आ सके. सो दैट इज अ हेल्दी बिजनेस इन अ मार्केट विच इज वेरी क्राउडेड, क्लटर्ड. आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो सब लोग बेच रहे हैं तो आपकी यूनिकनेस नहीं रहेगी, आपको प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली जहां पे भी जो चीज चलती है सब लोग वही शुरू कर देते हैं. सो फाइंड योर निश, फाइंड योर स्पेशलिटी, और वो स्पेशलिटी को आप प्रमोट करेंगे तो ज्यादा आपको बिजनेस मिलेगा. हाउ शुड आई डिसाइड पोर्शन पर प्लेट? वेरी गुड क्वेश्चन. एज आई सेड कि ये जो कॉस्ट आपकी है, अगर आप 35% तक डायरेक्ट फूड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं 100 रुपए में से, तो उसमें जितना पोर्शन आता है दे दें. जितना भी आपकी प्लेट आप बेच रहे हैं 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की, उसका 35% तक डायरेक्ट फूड कॉस्ट के अंदर डाल. That will seem as a good value to people. And if your other costs are low, put that value into food. और पोर्शन साइज जो टिपिकली ग्रेवीज के अलग होते हैं, बिरयानी का अलग होता है, नूडल्स का अलग होता है, बट टिपिकल आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो 1 2 4 जो लोग ज्यादा चल रहे हैं, जिसके बारे में आपके इलाके में ज्यादा बातें होती हैं, उनको ऑर्डर करके घर मंगवा के देखें, उसकी प्राइस चेक करें, उसको पोर्शन को वे करें. वे में अगर चलिए ग्रेवी वाली चीज है और उसमें नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज पीसेस अलग निकालें, ग्रेवी अलग निकालें, और दोनों चीजों को वे करें. 2-3 प्लेयर से ऐसे ट्राई करें टू गेट अ सेंस कि आपके इलाके में लोकल कंपटीशन क्या कर रहा है, बिकॉज यू विल हैव टू कम्पीट इन दैट एरिया. यू हैव टू बी अवेयर. सिर्फ हवा में बिजनेस नहीं होता, बिजनेस में डीप डाइव करना पड़ता है. सो हम भी करते हैं. हम अगर हम न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे उस विसिनिटी में कितने का रेस्टोरेंट है, क्या पोजीशनिंग है, कैसी, और अगर ज्यादा चार्ज करना है तो ज्यादा चार्ज करने के लिए पैकेजिंग अच्छी महंगी देंगे तो ज्यादा लोगों को लगेगा कि अच्छा है. क्वालिटी ऑफ फूड और बेटर देना पड़ेगा, पैकेजिंग एक्सपीरियंस
कस्टमर केयर, सारी चीजें अगर बेटर होती जाएंगी तो प्रीमियम मिलता रहता है। अगर बेसिक फूड है, बेसिक पैकेजिंग है, बेसिक डिलीवरी है, तो वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, प्रीमियम नहीं मिलेगा। So this brings us to another question, and I think you partly answered it, which is about, is the location still an important factor, even when the apps allow you to deliver so far? But what you're saying actually makes it sound that it is. Like to an extent, 12 kilometer, 15 kilometer, based on how far the delivery app's going to deliver or your own person is going to deliver, the research that you're saying for the portion size and some of the competitors, it is still relevant. What's your take on that? Definitely. So understand the food business, especially what we are talking, this is fresh food, food that has to be eaten fresh. So first and foremost, expectation is अभी ऑर्डर किया आधे घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, right? Yes. That you cannot plan in any case कि आपके उतने सिस्टम शार्पन होते नहीं है शुरू में कि आप 10 किलोमीटर दूर का बेच दें। So it's better कि बाकी 5 कर रहे हैं तो आप 2 किलोमीटर के अंदर करें। और आपकी स्पेशलिटी इतनी जबरदस्त है कि तो आप कहें कि प्री ऑर्डर ले लेंगे। So start by starting not on all 7 days. स्टार्ट आप क्या करें, सिर्फ वीकेंड से शुरू कर दें, सिर्फ डिनर से शुरू कर दें। पीक टाइम जो होता है बिजनेस का, मैक्सिमम बिजनेस तभी से आता है, तो उस पीरियड से स्टार्ट करके देखें और उसको पहले शार्पन करें, धीरे धीरे उसको ठीक करते जाएं। पहले स्ट्रगल होगी, बट करने से वो ठीक हो जाएगा, एंड फिर आप उसका दायरा बढ़ाते जाएं, टाइमिंग बढ़ाते जाएं, and that's how any business grows. Don't make it too big to begin with, but understand the area that you are in, और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो और कितने लोग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में और कौन कौन वो कर रहा है, क्या आपसे वो बेटर क्वालिटी है, क्या आपसे उसकी प्राइसिंग बेटर है, क्या आपसे उसकी पैकेजिंग बेटर है, राइट? अगर है तो यू विल हैव टू मेक श्योर, बिकॉज कस्टमर डिस्कवरी ऑफ अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज वेरी फास्ट। वर्ड ऑफ माउथ बहुत फास्ट होता है। किसी ने अच्छा किया और आपने बोला कि मैंने यहां से ऑर्डर किया, दूसरे का अरे उनका बहुत अच्छा है, गॉन, राइट? So local area competition is important, but what we used to say in location, पहले क्या होता था, प्रीमियम लोकेशन की कॉस्ट हाई होती थी, उसमें डेमोक्रेसी आ गई। अब सस्ती जगह लेके भी प्रीमियम बिजनेस किया जा सकता है, घर से भी प्रीमियम बिजनेस किया जा सकता है। Amazing. How about designing the menu for these businesses? People are asking, how do you decide what dishes to go for? What is the ideal number? There are numerous questions that we are getting now, and as well as what we have. Sure. So typically हम लोग जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में मेन्यू करते हैं तो लुकिंग एट एवरीथिंग, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि अच्छी एक स्पेशलिटी मेन्यू के लिए अगर हमें देना है, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, मैक्सिकन हो, कुछ भी हो, राइट? स्पेशलिटी मेन्यू के लिए to look at a menu which is a whole well-rounded menu where it has starters also, it has main course, it has accompaniments, it has sweet, it has drinks. So we would say that try and keep it under 60 items. Try and keep it under 60 items. ऐसे सुनने में 60 बहुत ज्यादा लगता है, but actually जब मेन्यू में देखना शुरू करते हैं तो 60 बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। But you can create speciality with 5 to 10 things also. हम यही बनाते हैं, that's it. हम इसी में अच्छे हैं, okay? So if your whatever you do, if you are a specialist in that, you can sharpen your menu, you can shorten your menu, and you can go as low as 10 things. But to say कि
उससे कम में सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा। सी एक आइटम आप कहते हैं बिरयानी हमारी अच्छी, तो हम रोज बिरयानी बेचते हैं, वेरी गुड। पर वो बिरयानी में भी लोगों को फिर होता है कि चिकन वाली बिरयानी होगी, मटन वाली होगी, वेजिटेबल होगी, अंडे वाली होगी, आलू वाली होगी, पता चला वो उसके साथ में अच्छा रायता तो होगा ही होगा, उसके साथ में कुछ सैलेड होगा, अच्छा कबाब भी देते हो क्या? सो the neighborhood of the menu of your core also. So अब जैसे हम कहते हैं कि मैकडोनल्ड्स क्या बेचता है, बर्गर बेचता है, मेन्यू जाके देखें बर्गर के अलावा और 40 चीजें होंगी, राइट? But that is needed to complete your menu because that is how we eat. That is how we eat. तो वो कोर के साथ में उसकी नेबरहुड भी मेन्यू की जरूरी है। What should menu comprise of? It should be where the demand is. जिस चीज की जरूरत है वो बेचें। Marry that demand with the expertise you may have, you may hire. But ऐसे हवा में मत सोचो कि आइसलैंडिक फूड बेचना। आइसलैंड हम गए थे छुट्टी पे, वो अच्छा खाना था। If familiarity of food is not there, it will be very difficult to sell. So understand in selling, familiarity sells. आप वो खरीदते हैं जिससे आप familiar होते हैं। आप वो गाना सुनते हैं जो आपने सुना हुआ होता है। नए गाने को प्रमोट करना पड़ता है। बॉलीवुड है, इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, रेडियो स्टेशन होते हैं, टीवी स्टेशन होते हैं, वो गाने प्रमोट वो लोग कर सकते हैं। अकेला कोई किसी को प्रमोट नया गाना करना पड़े तो नहीं होगा। फिर भी आज भी जो पुराने गाने हैं, पल पल दिल के पास, फेमिलियर, सब लोग कहीं लगा दो, गाना शुरू हो जाएंगे, गुनगुनाना शुरू। सो इन बिजनेस फेमिलियरिटी इज इंपॉर्टेंट, फेमिलियरिटी सेल्स। सो शर्ट, मेंस शर्ट, 95%, this is global figure, 95% of shirts for men come in two colors, white and blue. I am wearing white, you are wearing blue. Yeah. Well, Different that's a coincidence. No, Yes. so this is a global thing. So I if you are- didn't know that. Yeah. This is surprising. yeah, आप अपनी wardrobe जाके check करना। और मेरी this is- सारी blue go to है। the shop. मेरी सारी blue। Exactly, right? Yeah. So that is how business is. You have to understand आप किस business में हैं, उसको समझें, थोड़ा सा deep dive करें, and these kind of sessions help, right? Absolutely. Yeah. This literally, like when I'm listening to it, some relative of mine is now in the process of starting a food business, right? I feel this could save somebody so much of heartache, lakhs of rupees. I don't know how much of time. So this is so good. I believe people who are planning to start, I wish there are people who are guiding in almost every sector like this, but this is so valuable. This is a gold mine of information. Food carts, food vans and delivery setups, are they, the food carts and food vans, still relevant? Would you say that they could still work, or delivery only setup is what people should only talk about now? Oh, no. Definitely. So understand what we are going through is temporary. This is not going to remain forever. We have historic data of so many years. So pandemic पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं. So maximum जो हमने pandemic का असर देखा है 36 months. ये आधे से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं और अब साइंस ने तरक्की कर लिया, वैक्सीन जल्दी भी आ गए हैं. So hopefully it will not be 36 months. It will be time would be lesser, and we are seeing, आप आसपास देख रहे हैं कि चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं, and it will get into one or two bumps before it becomes better. So don't think कि सब कुछ ठीक हो गया है. Delta variant is real. Third wave is real. So don't think that will not happen, because historic data, global data ये कहता है. तो आप ये सोचें कि हिंदुस्तान ने सोचा कि सेकंड वेव नहीं आई, कैसे नहीं आई? अब वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव शायद नहीं आई. It will be there. The intensity कितनी होगी, कितना ज्यादा होगा, वो that has to be seen. So the cart business, very smart business, right? Definitely should be looked at if you have a place. So any shop that you are doing has to survive on
footfalls, right? So ऐसी जगह पे होना चाहिए वो कार्ट जहाँ पे फुटफॉल आपकी वजह से जनरेट नहीं हो रहे हैं. You are buying into somebody else's footfall. Theoretically, you can create your footfalls. If your product is strong, इतनी दूर किलोमीटर में 2-2 घंटे दिल्ली से पराठे खाने के लिए बर्थ में जाते हैं. Yeah, but it has been built over a period of time. There is ऐसे नहीं overnight नहीं हो गया, right? There was some excellence that was there, but सालों लग जाते हैं ऐसी चीजों को build करने में. So get into carts. Don't worry. It will be a slow starter, but things will come back to normal. So definitely there is hope. Pricing for food. Is there any hack that you suggest or any formula? Yeah. So important thing is कि आप जो बेचना चाह रहे हैं, जो उसको खरीदने वाले हैं, उसके वो एनवायरनमेंट को थोड़ा टेस्ट करें. तो हम लोग पहले क्या करते थे, जब रेस्टोरेंट खोलते थे तो आसपास में जितने रेस्टोरेंट होते थे किसी भी क्यूजीन के, तो जैसे हम दुबई गए तो पहले हमने 1 महीना में हर रोज कम से कम 2 से 3 से 4 रेस्टोरेंट्स में जाके उनके मेन्यू देखते थे, स्टडी करते थे, क्या मिल रहा है, कितने प्राइस में मिल रहा है. अच्छा, तो तब फोन भी नहीं होते थे कि ऐसे फोटो ले ले, उनके ऐसे एप्स नहीं होती थी कि वहां से मेन्यू उतारा जा सके. अब तो सब पता चल जाता है कि आपके आसपास क्या मिल रहा है, राइट? सो डू दैट रिसर्च कि what is the average price of a dish, average price of a meal in your competition set. It's critical to know. Don't run away from this reality that you are doing business and there would be competition. And if you are getting into somebody else's market area, there would be resistance. Why would they want to let you in? They would not, right? तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी. तो अंडरस्टैंड उनकी प्राइसिंग क्या है, उनके पोर्शंस क्या हैं, एंड बी कंपेटिटिव. उस रेंज में रखें. अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट बेटर है, आपकी पैकेजिंग बेटर है, तो आप 10 से 15 से 20% प्रीमियम ले सकते. अदरवाइज प्राइसिंग नॉर्मली, अगर कंपटीशन है एंड यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग यूनिक, then aggressive pricing helps. Entry level pricing helps. अगर कोई चीज 100 में बेच रहा है तो हो सकता है आपको वो 85 में 80 में बेचनी पड़े. क्यों? क्योंकि you want people to have a reason to order from you. चल ट्राई करके देखते हैं, बड़ा रीजनेबल है, राइट? पर अगर आपको लग रहा है नहीं, आप पोजिशनिंग वाइज यू वांट टू पोजिशन हायर, बिजनेस थोड़ा कम मिलेगा, बट यू कैन डू दैट. बट रेंज जो कंपटीशन है और प्रोडक्ट सिमिलर है, तो रेंज ऊपर या नीचे 20% से ज्यादा का शिफ्ट मत करो. देयर इज अ रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द प्राइसिंग इज डन इन ऑफ अ सिमिलर नेचर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट द कस्टमर इज विलिंग टू पे. परसीव्ड वैल्यू ऑफ समथिंग, वो परसीव्ड वैल्यू किसी ने पहले डिस्कवर की हुई है, तो आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं. क्योंकि आपको ऐसी नई चीज, हम नई चीज अगर कोई बनाते हैं तो हमें संजीव कपूर ब्रांड में ये कोर्स कितने का बिकेगा, वी विल हैव टू डिस्कवर. अगर ऐसे ही 50 लोग कर रहे होते तो इनसे ये भी इतने कर रहे हैं, ये भी इतने कर रहे हैं, चलो इसमें हम संजीव कपूर हैं, हम इसको हम 20% एक्स्ट्रा हम चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो लेकिन whatever business of food that is there, there's already a lot of people that are doing it, so study that. Now, I have a lot of questions. I mean, I'm surprised to see there are about 60 in the Q&A section. How much leverage with time do we have? I understand that we had... No, we can take as many questions. Don't. Okay, great. So just before I jump on to the audience Q&A, there is one more question that people have repeatedly asked earlier. So 3 tips that you would have, 3 most important tips that you think are key to growing a business in the food space, especially when somebody has just started it from home. Right. So don't think of growth. Think of doing it well first. Establish. Do not create a mess. Do whatever you are doing, make sure everything
I say that don't wait for perfection, but be perfect. Get to perfection. Okay, so it's not that I say that perfection is not important. Perfection is important. Get everything right, and that everything right is your offering, your menu, your pricing, your packaging, your delivery. कितना आप उसके आपकी स्टोरी टेलिंग क्या है, आपका सोशल मीडिया क्या है, आपकी मार्केटिंग क्या है, आपकी फीडबैक का रिस्पॉन्स क्या है, आपके मेन्यू में नई चीजें आप कितने टाइम बाद डाल सकते हैं. There are, like in our course, we have so much of material. So to वो पढ़ने में ही, वो याद करने में ही, उसको प्रैक्टिस में लाने में ही टाइम लगेगा, right? But do that. Growth बाद में अपने आप आ जाए. अगर आपने काम अच्छे से सीख लिया, अगर आपने सातों सुरों को अच्छे से पकड़ लिया, तो राग कोई भी गा सकता है, पर 7 सुर पहले पकड़ने बहुत जरूरी है. अगर उस पे टाइम नहीं दिया, आपने सोचा कि फिल्मी गानों से शुरू करते हैं, गाना ये अच्छा गा लेते हैं, पर ये नहीं पता कि कौन कैसे बना, कैसे था, क्या था, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो शायद कुछ गाने अच्छे गा लेंगे, राग फिर भी नहीं गा पाएंगे, परफेक्शन नहीं आ पाएंगे. सो फाउंडेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इज ऑन, एक तो अपने आप के प्रोडक्ट को जितना ज्यादा डीपली जान सकते हो. दूसरा, किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, हु इज योर कस्टमर, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप करें. बिकॉज क्लाउड किचन डिलीवरी वाले में वो नहीं पता होते कौन होते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर तो दिख जाते हैं, बता देते हैं वो क्या है. सो अ फीडबैक, अ रिव्यू सिस्टम वो बहुत अच्छा होना चाहिए. दैट make sure that you incentivize feedback. Don't worry that there is negative feedback, because that will be. Taste सबके अलग-अलग होते हैं, but don't shy away from bad reviews. Don't shy away from something that people have said. Use that as an opportunity to correct any mistake that may be there. Don't ऐसे मत छोड़ दें उनको कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं लोग, उनको क्या पता है, ऐसा नहीं है. बट अगर बिजनेस में सर्वाइव करना है, तो सामने जो कस्टमर कह रहा है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट. सो रिमेंबर दैट. सो अपने एंड पे अपने प्रोडक्ट की डेप्थ में जाएं, फाउंडेशन पे जाएं, सामने जो बिजनेस हो रहा है वो कौन दे रहा है, उसको आप अच्छी तरीके से समझें, और जो आपका बिजनेस का दायरा है, जो एनवायरनमेंट है, उसकी स्टडी जितनी डीप करेंगे उतना बेटर होगा. सो वन, योर प्रोडक्ट, डेप्थ इन दैट. सेकंड, डेप्थ इन द कंज्यूमर. एंड थर्ड, डेप्थ इन द environment that you operate in. Once you understand this better, these three things, business growth आप देखेंगे अपने आप होनी शुरू हो जाएगी as you get better at these three aspects. Super amazing. Now there are so many more, but I would quickly want to take the names of 3 winners that were selected. And then jump back into the questions. We have tons, so I would let you choose the questions as well that you want to address. I'll quickly call upon 3 winners for the competition that we had announced last month, which was around the concept of them getting benefited from some of the course of Sanjeev Kapoor Academy. And the 3 winners are Anagha, is the first winner. So I would request our team to bring Anagha on. I hope I'm pronouncing the name right. On the session as a panelist. Then the second winner is Vinita Rawat. And the third winner is Usha Raghunath. So I think we've got Anagha Udupi. That's the full name. Hi Anagha, I hope you can hear us now. So you are on stage with Sanjeev ji now. You can say hello. Hello. नमस्ते संजीव जी. नमस्ते नमस्ते. आप उडुपी से हैं? हाँ जी. तो अभी कहाँ पे हैं, उडुपी में हैं या किधर हैं?
अभी हैदराबाद में है मगर Hyderabad. parents and all are there. Oh, they are in Udupi. Okay, okay. Lovely part of India. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. Congratulations. Congratulations. Thank you so much. We are glad to be a part of this show where we are talking to you. Thank you. Thank you very much. Thank you. And Anagha is the name of your daughter, right? I mean, so we distinctly remember looking at her testimonial and how she benefited from the academy. It is so nice to see young people paying serious attention to education beyond academics. So this is great. Congratulations, Anagha. Yeah, it is very interesting. मैं last week की बात बताता हूँ, किधर I didn't tell you. So हमारी building में मैं आ रहा था, lift के पास में खड़ा हुआ था. There is a young girl, maybe 11, 12 years old. She comes up to me and says, "Uncle, I joined your academy, and I'm starting my business of that. I don't know whether she stays in same building or she's relative of somebody. I don't know because Masterclass आजकल वैसे भी पहना होता है, and तो मुझे पता नहीं. And so it is very encouraging that younger generation is taking interest in this. Very well done, Anand. Very good. Well done. So you did the program Start Your Food Business from Home, or was it some other program? Start Your Food Business from Home was it? Okay. And we hope to see you start a food business very soon. Keep learning. So glad to have you here. Congratulations again. Thank you. Congratulations. Thank you. Thanks. Thank you. Bye. Yeah. George, do we have other people on the call? Vinita and Usha Raghunath? Yes. Okay, so they're joining now. In the meantime, I'll answer one question which I saw. That somebody who started this business but cannot grow this because she's shy, and she's shy in taking money from friends and relatives. She's single, and so my advice would be, अगर business कर रहे हैं, तो आपके जो family और friends हैं, वो अगर आपके real family, real friends हैं, तो आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है, because they would want to support you. So don't shy away from taking the money. You can give some token discount, goodwill discount, but I would say don't shy. ऐसा business के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए. Business के अंदर आप हॉबी से जब उनको घर पे बुलाएं, खाना खिलाने के लिए बुलाएं, as friends and family, तो तब आपके वो गेस्ट हैं, अदरवाइज आपके कस्टमर हैं. एंड मैं तो जितने हमारे कोई जान पहचान में कभी भी कोई बिजनेस करता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, तो मैं उनको पैसे कभी भी कुछ उनसे लेता हूँ, whatever business they are in, and let's say they say कि नहीं हम आपसे नहीं लेंगे, ऐसे शर्माने वाले बहुत लोग हैं. तो मैं एक उसका मैंने तरीका बना रखा है. So what I say is, नहीं ये पैसे बहुत जरूरी हैं देने, because this is good luck. Whenever I pay, it brings good luck to your business. So don't say no. So फिर चुपचाप ले लेते हैं. So anybody who is a friend and a relative, and anybody जो दूसरे आपके कोई आसपास वाले शुरू कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करें इस तरह से, and don't expect कि कुछ क्या फ्री मिलेगा, but promote them, because अगर घर वाले अपने कम्युनिटी वाले हेल्प नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे. And this brings me to an idea that somebody had shared. I forget the name. They said the way baby showers are done, we need to do business showers. When any of our friends is starting a business, we all need to bring in our gifts, money, resources to help them start, because it's as important as giving birth to a new life. So some communities in India still do it. They बहुत अच्छे से support करते हैं, business के अंदर support करते हैं, but not all. Yes. Yeah. But thank you so much for those words of encouragement. So we've got Vinita Rawat with us and Usha Raghunathji as well. So hi, Vinita, please unmute your mic there and you can speak.
Yes, Vinita ji and Usha ji. Mic आपका mute पे ही है अभी. Do we have? Usha ji has unmuted Vinita ji also. Perfect. Love. गुड इवनिंग सर. Good evening. कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया. कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, रहती यूपी नोएडा में हूँ. Okay. मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने आपका आज तक के चैनल में ऐसी एक न्यूज आ रही थी कि मिस्टर बिल क्लिंटन को आपके हाथ का वो कुल्फी फालूदा बड़ा पसंद आया था. तो उस समय कहीं मेरे माइंड में क्लिक करा कि मैं आपसे कभी ना कभी जरूर मिलूंगी. और इतना इजी मेरे लिए ये सब होगा कि प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के थ्रू ही सारा कुछ प्रिपेयर किया हुआ था और इतना इजी ये होगा पॉसिबल मैंने कभी सोचा नहीं था. गुड, आई एम ग्लैड. अच्छा लगा आपको, और इसी तरह से और बढ़िया करें, और बढ़िया खाना बनाएं, खिलाएं, खाएं, हेल्दी खाना बनाएं, और सबको औरों को प्रोत्साहित करें, औरों को इनकरेज करें अपने खाने के साथ में. वैसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते खाना बनाएं. एंड आई कैन सी उषा जी स्माइलिंग वेरी वेल. गुड टू सी यू. Hi, sir. हाय. उषा जी, आप कहाँ से हैं और I'm कौन from सा कोर्स Kerala. आपने? You're from Kerala. I'm from Kerala, yeah. And I've chosen home style and restaurant style cooking. Lovely. Okay. So are you still in Kerala, or you're? Yeah, I'm in Kerala. I'm in from Kozhikode, Calicut. Oh, Calicut, of course. Yeah. Yeah. Nice. Very good food you get in that part. Actually, just before, so last year in Feb, we filmed there. So there is something that we are doing at international level. तो उसके लिए हमने वहाँ पे फिल्म किया था. Therefore, yeah, in Kerala, all across, we have been shooting for some time, but I think this time we did for about 5 days in different parts. Yeah. And strangely, I have lots of my friends who are from Kerala. My best friends are from. Yeah, you're mentioning about Mr. Vinod Nair. Yes. Yes. Yeah. Vinod and Sarah. So Sarah, she also cooks very good food. Vinod was a PR person, और उसने अब अपना खाना बना के बेचता है. And he does very good business. In fact, it was his birthday 3 days ago, so he invited us home. वो इतनी सारी चीजें उसने बनाई थी. He had, and he does. He and Sarah, they do very good food. Her style is Syrian Christian cooking she does, and so yeah, I'm lucky I can get good food. I don't shy away from. Yeah. Actually, my interest in cooking doubled. As I told, my husband is a pakka foodie. He loves food. Okay. And yeah, and he appreciates. And if he does not like it, he says that also cut and dry. Yeah. So one thing is, anybody who's watching this, that when you eat something, first and foremost, focus on what is right. उसमें अच्छा क्या है, उस पे ध्यान दें. Most of the time, our mind goes to what is not right. That is intuitive. That is inbuilt. हम लोग इस country में, we have been born and brought up in India, where there's so much that is wrong that we pick up what is not right, right? But I would say when it comes to food, let's try and focus on what is right, because the person who has cooked puts so much effort, pain, love, सब कुछ डलता है. And उसके बाद में खाने वाले ने 1 minute में बोल दिया क्या है, what is this? That's demotivating. So first look at what is right. Let's appreciate that. And if there is something that you don't like, then bring that up if you need to. Otherwise, even in burnt toast, there would be 20 things that you will love. That's right. Congratulations, Usha ji. Congratulations, Vinita ji. We wish you the best, and there are many more courses coming. We hope that you keep learning, keep cooking better food, and keep bringing smiles to people's faces. So thank you so much. So what should be done also is should take a screenshot of this
Kinner and We have the recording. We will be oh, sending you have it the to recording. them. Yeah, you can send. Yes, we will be sending. It's being Fantastic. recorded, the session. So Yeah, yeah. you'll all be receiving the screenshots as well. सर मैं आपसे ये- कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं ऑलरेडी जब से मैंने आपका कोर्स लिया है, ऑलरेडी मैं 2 ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब मैं ले चुकी हूँ और Okay. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जितने भी गेस्ट आते थे मुझे इंस्पायर करते थे कि आपको अपना जो ये खाना है इसे बाहर निकालना चाहिए, इसको बेचना चाहिए। फिर मुझे यही होता था कि मतलब मैं कैसे इसको स्टार्ट करूं, और जैसे ही मैंने आपका ये कोर्स देखा, मैंने तुरंत इसको अपने आप को एनरोल किया और फिर खुद से ही अंदर से ये पावर आ गई और मैंने स्टार्ट कर दिया सर। यानी पावर आपने हमेशा से दी और रहेगी और आएगी पावर, और आप अच्छा करें और बहुत बड़ा करें। थैंक यू सर। All the best. Thank you. Thanks for joining us. So we can pick a few questions now. In the Q&A section, there are tons. I would let you pick the ones that you want to begin with. Okay, so I would. What are the points to be noted when we present a dish? Food has to look good to begin with. खाने पहले आंखों से खाते हैं, तो it should look good, it should smell good, it should be senses को अपील करना चाहिए, आपकी senses को अपील करना चाहिए. What type of name should be for health related recipes? अगर आपको कुछ healthy करना है तो आप उसके अंदर सिर्फ health बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी और चीजें उसके अंदर आ सकती हैं. आप कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप होलसम, ब्रांड एक अलग होता है, डिस्क्रिप्शन एक अलग होती है, फ्रेशनेस, anything that will denote freshness, right? So you want to do any thing which is morning glory, right? Is something that sounds fresh. Okay, morning glory also is the name of a vegetable. So now there is that discovery, there is something that is there. तो आप ये जिसने ये हेल्थ के लिए बात की, तो मैं उसके नाम की बता रहा हूँ. बाकी what will be the minimum investment to start? देखिए, आप घर बैठे अगर आपको करना है तो आप 2000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और 10 लाख रुपए भी कम पहुंच सकते हैं. ये स्केल पे डिपेंड करेगा आपको. तो आई वुड से दैट इन्वेस्टमेंट आप कितना स्केल रखना चाहते हैं, दैट इज समथिंग वो आपको देखना पड़ेगा. अगर आपको 25,000 रुपए कमाने और आप सोचेंगे 1,000 रुपए लगा के 25,000 रुपए कमा लेंगे तो नहीं होगा. सो फॉर अगर आपको महीने के लेट्स से 25,000 कमाने, let's look at that. So the investment of घर से शुरू करने के लिए, बिजनेस के लिए अलग रूल्स होते हैं, तो आप उसका 12 टाइम्स, 10 से 12 टाइम इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड हो. अगर दूसरा बड़ा स्केल पे बिजनेस करना होता है तो आपकी जो मंथली एक्सपेक्टेशन है उससे करीब 36 गुना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तब जाके आपको उतने तक पहुंचेंगे. बट घर में करना है तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे 10 से 12 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपका स्केल कंसिस्टेंट लेवल पे आ सकता है. I've got a question from Nara Yes. Priya. She's asking if I start a home cooking business, what packaging materials would you suggest? And this is a question that I've repeatedly seen, so I thought would be Sorry, relevant. I was reading some other question. Sorry. So Priya is asking packaging. What would your recommendation be around what it should be? How should they decide on the right design? How much to spend? What not? It's a question we generally get from people. Very good. So packaging of food, right? What the Yes. food should be packed in. So when you are starting and starting from home, the scale is not very big.
Start with the packaging that's easily available in your neighborhood. Start with packaging that most people are using. That's counterintuitive, but great. Yeah. Start with what is बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा. Create a differentiation by putting a sleeve around it. तो लोग सेलो टेप लगाते हैं, उसकी जगह आप सेलो टेप भी लगा सकते हैं, बट क्रिएट डिजिटल प्रिंटिंग हो सकती है विच कैन बी स्टक, जो आप यूनिक आप बना सकते हैं. बट अदरवाइज पैकेजिंग पे अपना डिजाइन, पैकेजिंग को प्रिंट करना, वो सारी चीजें करना, या स्टिकर लगा सकते हैं उस पर. सो पैकेजिंग, जो कोर पैकेजिंग है वो जो आसपास सब कर रहे हैं, उससे अपना डिफरेंशिएशन स्टिकर प्रिंट करवा के, स्लीव प्रिंट करवा के, या बाहर का ब्राउन बैग या न्यूज़पेपर का बैग बनाया हुआ या क्लॉथ का, उससे डिफरेंशिएशन क्रिएट करें. बट पैकेजिंग, keep it efficient, keep it something that is spill proof, keep it something that is allowed, that's legal, that's not made with plastic, try and doing these things, but create your own stamp. थोड़ा सा डिजाइन एस्थेटिक्स पे ध्यान जरूर दें. प्रेफरेबली माइक्रोवेवेबल हो, वो जरूर देखें. आज के जमाने में वो जरूर हो गया. स्पिल प्रूफ हो, वो डेफिनेटली ध्यान दें. बहुत ज्यादा महंगी ना. Great. Narendra Bhuvalka is asking how to handle customer escalations, maybe delay in delivery or spillage or any other issue. And this does become a lot of issue for a lot of people. And I do see this being asked repeatedly. So what's your first suggestion? and foremost, try and minimize that. अपने processes इतने strong करें, and over a period of time होंगे. शुरू में नहीं होंगे. शुरू में आप गलतियां करेंगे. But be sincere to smallest of problems. Be sincere. And उसको defend नहीं करें. उससे कोई भी जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, बेस्ट होता है जब आप सुन लेते हैं और उस पे एक्ट करते हैं. सिंसियरिटी, सिर्फ सुनने की सिंसियरिटी से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो promptness in listening is important. Then sincerity of listening is important. Then sincerity in solving that is important. And सारी चीजें instantly solve नहीं हो सकती. So I'll give an example. हमने एक हमारी कंपनी वंडर शेफ में एक पैन बनाया जिसमें थोड़ा इस तरह से था कि डिजाइन में कलर के अंदर प्लास्टिक एंड मेटल दोनों सेम कलर के हैंडल में, पर जो मेटल वाला पार्ट है वो कभी गर्म हो जाता है और डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों में, तो कभी कभी गर्म पार्ट पे भी हाथ लग सकता है. सो एंड इट्स नॉट कि वो गलती हो सकती है तो लग सकता है. नॉट दैट ऐसे तो गर्म पैन है, गर्म पैन को आप पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा ही, राइट. सो इट्स नॉट कि ये है, आप पैन को वापस मंगा लो क्योंकि ये खराब है. But it can be made better, it can be improved. So this is something that I heard, and any क्योंकि हमारे पास तो काफी पैन थे, तो anybody who would say this, so we'll tell them कि इसको इस तरह से करना है, तो अगर यहाँ से आपको पकड़ने की आदत है तो कपड़े के साथ में यहाँ से प्लीज पकड़ लें इसको. rather than saying कि नहीं आपको पकड़ना नहीं आता, ये ऐसे नहीं होता, ये नहीं है, ऐसा नहीं है. But we are also making sure that हम इस डिजाइन वाले जो हैं और रेंज नहीं बनाएंगे. So we did two things. So ना हमने रिप्लेस किया, ना हमने उसको, but we did not run away from the problem. अगर आपका डिफेक्ट है, let's say आपके पैन में से कोई स्क्रैच हो गया, कैसे कहीं से हो गया, whatever, आपने या whatever, we replace it, right? So आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. कितनी प्रॉम्प्टली कर सकते हैं ये आपके
एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. बट इज इट इम्पोर्टेंट? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रिटिकल. So I have Isha asking a follow on to the packaging question, which is probably my question as well. Plastic. I also usually don't like to order things in plastic because there's this news going around plastic all the time about it's not healthy to be heated up and stuff. So Isha, Gagan, multiple people have asked what should be the solution to pack the warm stuff in plastic ones or not to pack it. Yeah, so there are packaging that's available in plastic, which is allowed. ऐसा नहीं कि food grade वाली नहीं मिलती है. You get that also. So one is so that's a little bit more expensive. So you can do that. नहीं तो आजकल और पेपर पल्प के बगास बोलते हैं, उसकी पैकेजिंग आती है, थोड़ी और महंगी है वो भी. But ऐसी options available है. So you have to understand again your competition set. आप किस मार्केट में हैं, वहां पे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या. तो मैं मुंबई में देखता हूँ, आई डोंट नो दिल्ली में ऐसा होता है या बाकी शहरों में होता है, कि लोग जब जो इतने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं एक साइट के ऊपर, मैं गया जहाँ काम चल रहा था, तो वहां पे चाय तो सबको पीनी है, राइट. तो वहां पे कोई आया वर्कर, वो अपनी चाय लेके आया, पॉलिथीन की पतले से उसके अंदर चाय लेके आया. 8-10 लोगों की चाय थी, छोटे छोटे प्लास्टिक के कप इतने सारे वो साथ में थे, उसने निकाले. अब वो क्यों कैरी एक ही बंदा कर सकता है और चाय सबको गर्म चाहिए, तो उसमें लेके वो आया. नाउ वो फूड ग्रेड प्लास्टिक भी नहीं था, ना कप था, ना वो था, राइट. पर अगर वो फूड ग्रेड और वो सारे में आता, तो जो चाय पीने वाले हैं वो उतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते. Yes. उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट. सो ये दिस इज you will have to discover in which market are you playing, what is it that people are willing to so आपकी टोटल प्राइस में से, टोटल प्राइस में आप 6 से 7% पैकेजिंग के ऊपर खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. या सो ट्राई एंड, शुरू में हो सकता है कि आपके कम वॉल्यूम है तो पैकेजिंग थोड़ी महंगी पड़े, हो सकता है इट कैन गो अप टू 8% आल्सो, बट आइडियली ट्राई एंड कीप इट अंडर 7%. Okay. Now we've got Meenu Maheshwari who's saying she's a big fan of yours, and she's saying she's asking when is the baking course launching, and your top 3 tips for baking. ओके, सो बेकिंग कोर्स को सब कोर्स करेंगे, सब सारी चीजें करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे. अभी जैसे किरण ने बताया, एक हेल्थ प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, बिकॉज पैंडेमिक का टाइम है, इसमें लोग हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो डायबिटिक लोगों के लिए कैसा खाना होना चाहिए, सो हम ऐसे कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, वो लॉन्च करेंगे. बच्चों के कोर्सेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बेकिंग इज ऑल टाइम रिक्वेस्ट में काफी ऊपर आता है. डेफिनेटली विल लॉन्च दैट कोर्स. टिप्स में अगर है तो बेकिंग वाली जितनी चीजें होती हैं, बेकिंग इज अ थिंग ऑफ प्रिसिशन. सो नाप तोल बहुत जरूरी है. सो बेकिंग में आप चीजें नाप तोल के, वे करके, वेइंग स्केल होना जरूरी है, प्रिसिशन इक्विपमेंट होना जरूरी है. मतलब जो टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट है. तो वो बेसिकली आप जो अवन है वो अच्छी क्वालिटी का आपके पास में होना चाहिए. उसमें जो टेम्परेचर है डिजिटल होगा तो बहुत अच्छा होगा. रेसिपी जो है वो टेस्टेड रेसिपी होनी चाहिए. आपकी रेसिपी जो है वेल टेस्टेड रेसिपी होनी चाहिए. सो प्रिसिशन वाली जितनी चीजें होती हैं उसमें अपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले वेल टेस्टेड रेसिपीज को रिक्रिएट करने की कोशिश करें, और फिर अपने उसमें अपना फ्लेवर लेके आए. बिकॉज
जो चीजें ऐसी होती हैं उसके अंदर चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर हायर, सो कीप दैट इन माइंड। सो इतना ध्यान रख लेंगे, बेकिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। So Avnish Hirpara is asking, greetings sir, I have launched my own cart of chole bhature and chole samosa. And he's done the course as well, of course, so that's where the questions come from. Best time to add spices while making chole of bhature. I don't know if I get the question right, but I've just read it as it is. Sure. So spices जो हैं, जितने एरोमेटिक स्पाइसेस होते हैं, right? तो जैसे गरम मसाला है, right? उसको हम दो फॉर्म में लेट्स से हमने डाला, किसी भी खाने के लिए, छोले के लिए छोड़े या किसी भी चीज में, तो अगर होल यूज कर रहे हैं तो जब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब उसके अंदर डालते हैं, बिकॉज होल का जो उसका रस है, जो फ्लेवर है, वो टेस्ट है, वो धीरे धीरे जैसे चीजें पकेंगी वो आता जाएगा व्हाइल इट इज बीइंग कुक्ड। टॉप नोट्स लास्ट में और इनहैंस करने के लिए जो एरोमैट्स होते हैं, जो एरोमेटिक गरम मसाले जो होते हैं, उसको ऊपर से बाद में डालते हैं ताकि उसका टॉप नोट आए। जैसे कुछ चीज में आपने बनाया, कोई दाल बनाई, उसमें तड़का ऊपर से लगाया घी या मक्खन का, सो दैट टॉप नोट आपकी है, सो दैट यू डोंट मिस इट। तो कई बार क्या होता है, आप कोई चीज डाल देते हैं लेकिन वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट टाइमिंग ऑफ स्पाइसेस। बाकी लाल मिर्च, धनिया, ये जो चीजें हैं उसको बीच में डाला जाता है ताकि वो स्वाद भी उसका आए, जले भी नहीं, और उसको कुकिंग में वो कच्चे भी नहीं। सो दे नीड सफिशिएंट टाइम। पर जो एरोमेटिक स्पाइसेस होते हैं, एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, तेज पत्ता, सॉरी मेस हो गया, जायफल हो गया, ये जो चीजें हैं ये या तो एकदम बिगिनिंग होल डाल रहे हैं तो बिगिनिंग ऑफ द कुकिंग, और अगर पाउडर्ड में डाल रहे हैं तो एंड ऑफ द कुकिंग। ये थंब रूल है।